Hi guys, welcome back to another video on my channel. This is Anukriti here. So today's video is the most requested video by you all. I'm going to show you guys my secret amla oil recipe. Also, I'm going to share with you all few hair oiling hacks to grow long hair faster. Also to make them thick, strong and healthy. पर वीडियो में जाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो. To make amla oil, you guys need few amla, which is also known as Indian gooseberry. आप लोग 9 या 10 amla ले सकते हैं. After that, cut them into small pieces and put them in the blender. After that, add 1 cup of coconut oil and 1 cup of sesame oil, जिसे हम हिंदी में तिल का तेल भी कहते हैं. तीनों को अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए so that it will give you a nice thick paste. नेक्स्ट एक कढ़ाई ले लीजिए और उसमें इस पेस्ट को डाल दीजिए एंड उसको धीरे धीरे लो फ्लेम पे अच्छे से बॉईल होने दें. कीप स्टरिंग इट इन बिटवीन जिससे ये अच्छे से बॉईल हो जाए, स्टिक ना हो और बर्न ना हो. लो फ्लेम पर ही उसे धीरे धीरे बॉईल होने दें जब तक आपको एक लाइट ब्राउन कलर ना मिल जाए. सो गाइस, मैंने इसे रात भर रखे रहने दिया था इसलिए थोड़ा डार्क ब्राउन हो गया है, लेकिन जैसे ही ये ठंडा हो जाए आप इसको तुरंत स्ट्रेन कर सकते हैं. स्ट्रेन करने के लिए यूज़ अ कॉटन क्लॉथ. पुट द पेस्ट इन द क्लॉथ और उसको फिर अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए. So guys, this is how I make amla oil at home. And in this amla oil, you guys can also add few other oils as well, like mustard oil, castor oil, olive oil. Now I'm gonna show you guys the correct way to apply this oil for faster hair growth and less hair fall. First, use a serum on your hair to detangle your hair, जिससे जो हम oil apply करने वाले हैं वो हमारे बालों में smoothly apply हो जाए. Next, use a wide wooden tooth comb to detangle your hair easily, especially if you have wavy hair like mine or curly hair. So guys, wooden tooth comb के बहुत सारे benefits हैं. They are gentle on hair, they keep your scalp healthy, also encourages hair growth, prevents tangles and breakage, helps reduce dandruff and itchy scalp, also removes dirt and foreign particles. So guys, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने हेयर केयर रूटीन में वुडन टूथ कॉम्ब इंक्लूड नहीं किया है तो प्लीज़ इंक्लूड कर लीजिए. It will definitely save your hair, guys. Now I'm gonna apply this oil on my hair and I'm gonna show you guys the correct way to apply it. First, I'm gonna take 1 pump on my palm and I'm going to warm it between my palms. Then I'm going to apply it on my scalp and going to massage with fingertips using a circular motion. So guys, use your fingertips, work it into your scalp thoroughly. Use circular motions to work the oil into the roots of your hair. आप लोग इस ऑयल को अप्लाई करने से पहले इसे हीट भी कर सकते हैं. So guys, this is the correct way to apply oil on your hair because it will promote faster hair growth and also help to reduce hair fall. I would recommend you guys to oil your hair at night and wash it off the next day because oiling also helps to improve the quality of sleep, calms your mind and helps to get rid of dandruff. This way you guys will get the maximum benefits from oil. After that, apply the oil left on your palms to your hair very gently. नेक्स्ट, आप लोग अपने बालों को टाल से या शार कैप से भी कवर कर सकते हैं एंड कैन लीव ऑन ओवरनाइट. आई जनरली प्रेफर टू ब्रेड माई हेयर एंड लीव देम ओवरनाइट टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ ऑयल्स. सो गाइस, आमला ऑयल हैज सो मेनी बेनिफिट्स फॉर हेयर. इट स्ट्रेंथन द स्कैल्प एंड हेयर. It also reduces premature pigment loss from hair or graying. It stimulates hair growth, reduce hair loss, prevent or treat dandruff and dry scalp. It also prevent or treat parasitic hair and scalp infections like lice infections. Amla oil is rich in vitamin C, vitamin E, fatty acids and antioxidants, जो आपके बालों को soft, shinier और voluminous भी बनाता है. It also make your hair grow faster. Sesame oil भी आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है. It also treats head lice. It also soothes heat damaged and dry hair. It also prevents hair fall due to stress and prevents dandruff. So that's it for today's video, guys. I hope you guys find this video really helpful and useful. If you guys give this amla oil recipe a try, do let me know your feedback in the comment section below. And do not forget to give this video a big thumbs up. Also, do not forget to share this video and follow me on Instagram as well. I'll see you all in my next video. Till then, take care, be safe and bye-bye.